The Thar Desert, one of the largest deserts in the world. This arid region serves as a significant international border between India and Pakistan. Making it a focal point for security. One of the most critical frontiers for India's border security force. They brave extreme temperatures and rugged terrain. These brave men and women serve on the front lines of national security. Sansad TV gets a unique opportunity to visit border outposts of Border Security Force at the Indo-Pak border in the Thar Desert to tell you the tale of valor and unflinching commitment of the Border Security Force. Hello and welcome viewers, you're watching National Security with your host Kriti Mishra, and in this edition we'll focus on world's largest border guarding force, India's first line of defense, the BSF. We are at the international border of India and Pakistan in Jaisalmer, next to the zero line, and you can see Pakistan beyond these fences next to me. In this edition, I'll take you inside the world of the sentinels of Thar Desert. Come along. Spanning approximately 2 lakh square kilometers, the Thar is primarily located in northwestern India, extending into southeastern Pakistan. Its strategic importance is underscored by the historical tensions and conflicts between the two countries. The desert's inhospitable terrain presents unique challenges for border security, necessitating a robust presence of the Border Security Force on the Indian side. The BSF is tasked with preventing infiltration and smuggling, making its role critical in maintaining national security. It also collaborates with intelligence agencies to monitor and disrupt potential infiltration attempts. Intelligence-led operations are key to thwarting illegal border movements. As both nations continue to navigate their complex relationship, the role of the Thar Desert as a frontier remains pivotal in shaping the future interactions. The proximity to sensitive military installations and the presence of various insurgent groups further complicate the security landscape. The harsh climate with extreme temperatures and limited water sources poses significant challenges for surveillance and patrolling. The BSF plays a vital role in maintaining peace and security in this strategically important region, engaging in a range of activities that address the complex security dynamics of the Thar Desert. The Thar Desert is characterized by extreme temperatures, ranging from scorching heat during the day to chilly nights. Summers can see temperatures soar above 55 degrees Celsius, making operations strenuous for personnel. The extreme conditions not only affect the physical endurance of the forces,
but also challenge the functionality of equipment and vehicles. Actually, BSF is the most experienced border guarding force on this earth, because the border management in BSF has evolved over a period of time. Live border management, we have done the border management on eastern borders and western borders, which are most sensitive borders of the country. Very live, every time there is something going on. So the border management in BSF has evolved over a period of time, and therefore one of the most important characteristics of our functioning is looking ahead. We always see what is going to happen, what will be the next move of the enemy, what will be the next move of the trans-border criminals. For example, the drones. Drone menace, it is a serious problem on the western border right now. This was anticipated well in advance by the BSF and our higher strata, and it was like solutions were thought well in advance. So by the time the trouble came, we were already prepared for it. For example, we in the initial stage, before we got the anti-drone systems, we had our teams which were ready to shoot the drones. So we prepared the guns for that. We took on a new role. In fact, it was a completely unexpected role for any force for that matter. The desert's landscape is marked by shifting sand dunes, rocky outcrops, and sparse vegetation, making navigation difficult. The lack of clear paths complicates patrol routes. This rugged environment requires specialized training and equipment for effective operations. Dehydration becomes a critical concern during long patrols, necessitating careful planning for hydration and resupply. The vast and arid landscape poses difficulties for surveillance and rapid response. The shifting sands in extreme weather can hinder movement and visibility, complicating patrolling efforts. Strategic watchtowers and fencing are crucial for monitoring movement across the border. These installations allow BSF to observe activities and respond swiftly to any suspicious movements. The use of drones, thermal imaging, and motion sensors has enhanced the BSF's ability to patrol vast stretches of desert terrain. These technologies help in identifying potential threats and gathering intelligence. Continuous patrolling by foot and vehicle ensures that BSF personnel maintain a physical presence, deterring illegal activities and reassuring local communities. Investment in infrastructure such as roads and border outposts has been prioritized to facilitate better access and mobility for the BSF personnel in remote areas. The routine is rigorous, marked by early mornings and late evenings. यहाँ गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री के बीच में रहता है, जिसमें धूल भरी आंधियाँ चलती हैं एवं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेडिकल इश्यूज़ आते हैं, जिन्हें नेगोशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू लिक्विड डाइट लेते हैं। पहनावे में हम पटका, फुल बाजू कपड़े एवं चश्मा का इस्तेमाल करते हैं, जो गोगल हमें आँखों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस एरिया में यहाँ पे सांप, बिच्छू काफ़ी निकलते हैं, जिनसे भी हम नेगोशिएट करने के लिए टॉर्च और हर टाइम कपड़े को, जूते को बहुत ही सावधानी के साथ और उसको चेक करके ही पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रात के समय टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है और दिन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वेरिएशन की वजह से भी स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। बट यहाँ पे हमें सुविधाओं के तौर पे यहाँ पे वाटर कूलर्स, सोलर कूलर्स और अकोमोडेशन काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करवाया गया है। इसके साथ ही हमें ट्रेनिंग भी उस तरह दी गई है कि हम इन सभी चीज़ों को नेगोशिएट करते हुए और यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से और चाक चौबंद ड्यूटी करते हैं।
BSF has scripted history by deploying women at the border outposts. They are guarding our borders meticulously and proving second to none. The integration of women into the BSF began in 1980s, reflecting a broader trend of women's increasing participation in defense and security roles in India. Initially, women were limited to non-combat roles, but over time, their responsibilities expanded to include frontline duties. Today, women in the BSF are involved in various functions, from surveillance and patrolling to intelligence gathering and community outreach. Women BSF personnel are actively engaged in patrolling the Thar Desert, a task that demands physical endurance, mental resilience, and quick decision making. This inclusion of women has significantly enhanced security operations. Their unique perspectives and approaches to problem solving contribute to more comprehensive security strategies. इसमें हम पुरुषों के साथ मिलके, जिसमें हमारी महिला प्लाटून भी है एक, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। बॉर्डर में डिफ़िकल्टी आती हैं, बॉर्डर हर तरीके का है, लेकिन जो BSF की सिखलाई है वो इस तरीके की है कि हम इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को काउंटर कर रहे हैं और आने वाले समय में जो महिलाएं हैं इससे भी अच्छा काम करेंगी। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम देश सेवा कर रहे हैं। और हमारा परिवार हमें देखता है, या परिवार में जब हम जाते हैं समाज हमें देखता है, तो काफ़ी हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस BSF के एक पार्ट हैं और इस BSF के थ्रू हम देश सेवा कर रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है, तो उसमें हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि क्या क्या आपको वहाँ पे जाके सिचुएशंस आपको टैकल करनी पड़ेंगी। बाकी वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। जैसे कि यहाँ इस वाले टेरेन में मेनली डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। समर्स में लगभग यहाँ पे टेम्परेचर 55 क्रॉस कर जाता है, 55 डिग्रीज़, एंड विंटर्स में यहाँ पे 0 डिग्रीज़ और -1 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो मेनली यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्टी हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे, जैसे रात को पेट्रोलिंग वगैरह करते टाइम यहाँ पे रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनसे थोड़ा बचाव करना एंड यही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मतलब जवानों को बॉदर करती है। महिला होने के नाम से तो सर सबसे पहले तो जो हम घर छोड़ के आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है। और जिन्होंने शादी कर रखी, बच्चे हैं, बच्चे छोड़ के आना, उनको मतलब कि छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मौसम के हिसाब से देखा जाए तो जैसे इधर गर्मी में टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है और सर्दियों में 0 हो जाता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो कि मौसम के हिसाब से हम ढल जाते हैं, जैसा मौसम होता है वैसे ही अपने आप को डाल लेते हैं। Women serving in the BSF are not just personnel, they are role models for future generations. Their presence encourages young girls to pursue careers in defense and security, challenging traditional gender norms. Breaking stereotypes, these women empower others in their communities. They demonstrate that women can excel in demanding roles, inspiring change in societal attitudes. As the BSF continues to evolve, the presence of women will play a critical role in shaping the future of border security force in India. By overcoming challenges and serving as role models, women in the BSF are paving the way for a more inclusive and effective security force, ensuring the safety and stability of the nation. Well, viewers, we are at the Longewala post right now. And let me take you back in time and narrate the saga of unmatched heroism and valor of the BSF during the 1971 war that will resonate for all times to come. Longewala is a strategic outpost located in the Thar Desert of Rajasthan. It holds historical significance due to its role in the 1971 Indo-Pak War,
Then it became a focal point of military engagement. The BSF plays a crucial role in securing this area, ensuring the safety of the border and maintaining peace. Longewala gained prominence during the 1971 Indo-Pak War, particularly in the Battle of Longewala. On December 5, 1971, Pakistani forces launched an attack, intending to capture the post. However, they were met with fierce resistance from the BSF and the Indian Army. The battle highlighted the bravery and strategic importance of the BSF, which successfully repelled the assault, inflicting significant casualties on the enemy. 4 दिसंबर 1971 की रात पाक सोल्जरों ने अपने तमाम टैंक्स और 580 बख्तरबंद गाड़ियां और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड 3000 पाकिस्तानी सोल्जर इस लोंगेवाला वार क्षेत्र पे अर्धरात्र में अटैक किया। जो गाड़ी डीजल से चलती थी उस गाड़ी के ऊपर डीजल का बैरल बंधा हुआ था और जो गाड़ी पेट्रोल से चलती थी उस गाड़ी के ऊपर पेट्रोल का बैरल बंधा हुआ था। जब लोंगेवाला वार क्षेत्र में गाड़ियां दाखिल हुई और हमारी भारतीय सेना जब गाड़ियों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू किया तो गाड़ी पे लदे बैरल में गोलियां लगी, बैरल फटा, आग लगी और उन्हीं के तेल से पाक आर्मी की गाड़ियां धो धो करके जलना शुरू हुई। पाक आर्मी अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़ उल्टा पांव पाकिस्तान भागना शुरू कर दी। The valor displayed by BSF soldiers during the battle earned them commendations and recognition, solidifying Longewala's place in Indian military history. The site has since become a symbol of courage and resilience celebrated in military folklore. 4 दिसंबर 1971 की रात पाक सोल्जरों ने बॉर्डर पिलर 638 इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके बॉर्डर पिलर 638 को उखेड़ कर ले आके यहाँ स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया पाकिस्तान यहाँ तक है। लेकिन पाक आर्मी का टारगेट था 5 दिसंबर 1971 की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करेंगे, दोपहर का लंच जैसलमेर लेंगे और रात का डिनर जोधपुर में करेंगे और बॉर्डर पिलर 638 को जोधपुर में स्थापित कर देंगे और ये साबित कर देंगे हमारा पाकिस्तान जोधपुर तक है। लेकिन 4 दिसंबर 1971 की रात इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटल फील्ड में भारतीय सेना और BSF पाक आर्मी को घेर लिया। 4 दिसंबर 1971 से लेके 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोंगेवाला की लड़ाई 12 दिन हुई। 16 दिसंबर 1971 की शाम को इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, लोंगेवाला बैटल फील्ड में पाक आर्मी अपने घुटने टेक दिए, अपने हथियार डाल दिया और अपने हाथ ऊपर कर दिया। बोला भारत आप जीते, हम हारे, जय हिंद, जय भारत का नारा लगाते हुए पाक आर्मी 16 दिसंबर 1971 की शाम को इस भारत के सरजमी लोंगेवाला की धरा से वापस पाकिस्तान कूच कर गई। भारतीय सेना और BSF के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र, लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र को सर्च करने का आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना और BSF पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र को सर्च किया। पाक आर्मी के तमाम ऐसे 48 टैंक्स, 580 बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्नेशन, बम, गोला बारूद भारतीय सेना और BSF अपने कब्जा में लिया और 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी, 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और BSF अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को भारतीय सेना और BSF अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री पे ले जाकर सफ़ेद शांति का झंडा दिखाकर पाक आर्मी को आमंत्रित किया, पाक आर्मी को निमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो पाक आर्मी ने क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, ये हमारा कोई नहीं है। तो भारतीय सेना और BSF भारत पाक सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान एरिया में उन पाक शहीद जवानों के लिए भारतीय सेना और BSF ने कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की, दुआ की। The legacy of Longewala, particularly from the 1971 war, remains a testament to the bravery of those who serve and the ongoing commitment to safeguarding India's frontiers. We also got the opportunity to visit the Tanot temple manned by the BSF in the same sector. The origins of the Tanot temple are steeped in legend.
According to local folklore, the temple was built during the time of the Rajasthan king, and it is said that goddess Tanot appeared to protect the region from invaders. The Tanot temple gained further prominence during the 1971 Indo-Pak War. Located close to the border, the temple became a site of refuge for soldiers and local villagers. It is famously said that the temple remained unharmed during heavy shelling by Pakistani forces, leading many to believe that the goddess had protected it. This incident enhanced its status as a symbol of divine protection and resilience. As dusk descends, the likelihood of illegal infiltration increases, mandating heightened vigilance from the BSF. Darkness provides a natural cover for both security personnel and potential intruders. For the BSF, operating under the cover of night allows for stealthier movement and the element of surprise against any encroaching threats. Several successful night operations highlight the effectiveness of BSF strategies. The rapid response teams are able to intercept the intruders thanks to the intelligence gathered during the nighttime patrols. Protecting the Indo-Pak border at night in the Thar Desert is a challenging yet vital task for the Border Security Force. Through a combination of advanced technology, rigorous training, and community engagement, the BSF works tirelessly to safeguard national security. The complexities of nighttime operations, ranging from environmental challenges to psychological pressures, underscore the dedication and resilience of the personnel involved. As they patrol the silent, vast expanses of the Thar Desert under the cover of darkness, these personnel embody a commitment to duty that is essential for the security of our nation. Standing at the border, we contemplate the complexities of geopolitics and the impact of conflict on local communities. The border outposts symbolize not just a line on a map, but also the historical tensions. The harsh conditions of the Thar Desert are a constant presence in the lives of BSF personnel. Many of them share tales of their experiences, from routine patrols to the unique challenges of operating in such a harsh environment. These narratives often reflect a deep sense of duty and patriotism, as well as the camaraderie that develops among these soldiers. It was time for us to leave with greater appreciation for the sacrifices made by these individuals to protect the nation. As I end my day, I'm taxed, stressed, exhausted, and scorched. But I do realize that the BSF does it for us, day in and day out. I can only end this feature with a deep sense of gratitude. With camera persons D.K. Pandey and Junaid Iqbal Khan, and video editor Rohit Chando, I'm Kriti Mishra, signing off from the Indo-Pak border.
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.